Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड इयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एबे मु प्लस थ्री CBCS फिजिक्स ऑनर्स जीई आ MSc फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करूची जदि भल लागिला ताले वीडियोस को लाइक कर देबा और चैनल को सब्सक्राइब कर देबो यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स आल्सो इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पई बेल आइकन को एठी ऑल रे सेट कर देबो तापरे वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ावा पई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज पाई पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज टॉपिक रे हमें आइडियल बोस गैस बा बोस आइंस्टाइन गैस ए विषय रे पढिबा तो देखो बोस आइंस्टाइन आउ फर्मी-डिराक ए दुईटा जो स्टैटिस्टिक्स एटा आसुची अंडर क्वांटम स्टैटिस्टिक्स कैटेगरी रे ओके सो बोस आइंस्टाइन एक्चुअली पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओबे करे नहीं किंतु फर्मी-डिराक पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओबे करे दिस इज द बेसिक डिफरेंस ओके सो आमे कोन करिबा इन केस ऑफ योर बोस आइंस्टाइन हो बा फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन they need not be used for the ordinary atomic or molecular gases. Because these gases are in practice always described by the sufficient accuracy from the classical statistics, that is the Maxwell-Boltzmann distribution. So an assembly of bosons which are obviously indistinguishable, okay, and having zero or integral spin. Okay, so a assembly को ही हमें कहिबा बोस आइंस्टाइन गैस. So consider a perfect Bose-Einstein gas containing suppose small n number of bosons. Now let these particles be distributed among the quantum groups or states such that these are like n1 n2 dot 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 ni dot dot dot. Okay, so the number of particles in the quantum states whose approximate constant energy are respectively E1 E2 dot 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 ei dot dot dot. Okay, now as the gas is assumed to be perfect, so the interaction between its particle is negligible. ତେଣୁ ଆମେ जो एनर्जी अच्छी इट मे बी रिगार्डेड एज एंटायरली ट्रांसलेशनल. ओके, सो यार कैरेक्टर को आम ट्रांसलेशनल बोलिकी कहीपर बिकज इंटराक्शन टाक आम पार्टिकल नेग्लिजिबल धरुचु. देयरफॉर द रिजल्ट ऑब्टेन्ड in this case will be particularly applicable to the case of your monoatomic gas. तो suppose gi हेगला degeneracy or statistical weight of the ith quantum state. Then according to the Bose-Einstein distribution law, the most probable distribution will be given by the law, that is the function ni equal to gi by e to the power alpha plus beta ei minus 1. Alpha value है minus mu by kt, beta है 1 by kt. Okay, so एबे ए इक्वेशन को हमें लिखि परिबा gi by 1 by a e to the power beta I minus 1, where a is equal to e to the power minus alpha suppose हमें नेला. Now as the number of particles in a state cannot be negative, particle संख्या तो negative ही परिबोनी आदो शून्य हबो किंबा positive हबो, so we must always have ni greater than or equal to 0, right? So it requires what, that e to the power alpha plus beta ei equal to, which is 1 by a into e to the power beta ei must be greater than or equal to 1. Okay, so এই जो ভ্যালুটা আমার গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু 1 মানে এই যে ডিনোমিনেটরটা অলওয়েজ পজিটিভ হবো বা জিরো বি ধর হেই পারে. ওকে, নাও ইফ the ground state মানে the lower energy state is taken to be at suppose zero energy, তাহলে আমি লিখি পারিবা e to the power alpha which is equal to e to the power minus mu by kt or 1 by a is greater than equal to 1. ओके, जदि जीरो एनर्जी धरदेला ताले ei हेगला 0. सो एबे अल्फा को आम लिखि परिबा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, म्यू द केमिकल पोटेंशियल इज लेस देन इक्वल टू 0 and a is lying between 0 and 1. Okay, now the constant alpha can be determined by the condition n equal to summation I over ni. Okay, ni रो वैल्यू पुट कर देला. Okay, now it is known that the particles
in a box of normal size. Here, the translational levels are spaced closely enough so that we can integrate over the phase instead of summing over the particle states. Okay, summation न करिकी आमे integrate करिबा because close spacing जदि आमे देखिबा. Okay, so the number of particles in terms of your momentum GPdP lying in between the momentum your P and P plus dP याकू लेखि परिबा जोटा कि हला gs into 4 pi p square dp by h cube by v. ओके एठी h cube हे गला फेज स्पेस रो वॉल्यूम. ओके ताले गोटे मोमेंटम वॉल्यूम 4 pi p square dp आ गोटे पोजीशन वॉल्यूम v. gs कोन एटा होची स्पिन degeneracy factor which is caused by the particle having spin s. So for simplicity we take s equal to 0. Okay, because एठी बोसोन रो स्पिन टा जेतु 0 और इंटीग्रल हुए so simplicity बा हमें 0 नै गला ताले gs रो वैल्यू हे जिवो 1. Okay, and now equation 7 becomes GPdP equal to simply 4 pi v p square dp by h cube. Okay, ताले according to equation 1 the most probable distribution here, the number of particles in the momentum space or momentum range between p and p plus dp will be given by npdp equal to gpdp by e to the power alpha plus beta ei minus 1. Okay, ताले जेहेतु एटा आमे गोटे परफेक्ट गैस नहींचु हैविंग नॉन इंटीग्रेटिंग पार्टिकल्स सो ये एनर्जी टा इक्विवेलेंट टू काइनेटिक एनर्जी हेबो व्हिच इज p स्क्वायर बाय 2m राइट. याकू एबे आमे पुट करबा ताले एबे npdp रो वैल्यू अकॉर्डिंगली एतिकी आसी गला बाय पुटिंग बीटा इक्वल टू 1 by kt राइट. नाउ यूजिंग इक्वेशन 10 and 11. Okay, we get the number of particles lying between the energy range E and E plus DE एबे हमें यूज करिबा ताले देखो एनर्जी हिसाब रे याकू एबे हमें रिप्लेस कर देला राइट. सो एबे याकू टी सिंपलीफाई कर देबा हमें राइट. नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट x equal to E by kt so that dx equal to de by kt हला राइट. ताले NEDE रो वैल्यू एबे आसी जिवो मने रखो एठी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी रे NEDE इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम रे NPdP एटा हिची. सो ऊपर जो एटा ए जो जिनसटा केमती आसीला देखो E इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m थिला E इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m. सो दिस इंप्लाइज DE इक्वल टू केते हबो ना 2p dp बाय 2m राइट. एठी आमे कोन करिबा ना 2 और 2 तो कटि गला राइट. देन p स्क्वायर बाय 2m रु आमे एई रिलेशन रु पाई परिबा जो p स्क्वायर बाय 2m रु p रो वैल्यू केते आसीबो p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2me. ओके, सो एई जो p जगह रे आमे स्क्वायर रूट ऑफ 2me पुट करि परिबा. ओके, अच्छा एबे रिप्लेस करि देबा आमे dp को विथ दैट ऑफ योर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. सो सेही रिप्लेसमेंट एठी हेची से जा भी हो एबे आसीबा हमर एक्सप्रेशन को जतकी जाय जायतिला NEDE रो वैल्यू अकॉर्डिंगली आमे लिखि देबा बाय रिप्लेसमेंट ऑफ x. ओके, x रिप्लेसमेंट द्वारा याको एई भळा लिखि परिबा आमे ना कीपिंग इन माइंड द क्लोज स्पेसिंग ऑफ द लेवल्स. ओके, द लेजल्स ये प्रिंटिंग मिस्टेक अछि in this case. So the total number of particles is now given by एठी हमें इंटीग्रेशन कला n equal to integration over NEDE. ओके, सो एठी x रो लिमिट 0 to infinity हबो. ओके, सपोज हमें ए जो इंटीग्रेशन टा सुची along with the factor 2 by root pi याकू नै गला f1 alpha. ओके, देन एबे टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम याकू लिखि परिबा E equal to integration over NEDE. ओके, NEDE कर देला परे NEDE रो तो वैल्यू हमें ऊपर पाई सारिछु. ओके, ता सहित E मल्टीप्लाई हबो. सो रिप्लेसमेंट कर देला KTX NEDE by using equation 13 याकू फर्दर सिंप्लीफाई कला हमें इक्वेशन 14 यूज कला. देन एठी अनदर रिप्लेसमेंट हमें करिबा इंटीग्रेशन ता सहित 4 by 3 root pi. ओके, याकू नै गला f2 alpha. सो एटा आसी गला तुमरो टोटल एनर्जी रो एक्सप्रेशन. नाउ जदी हमें a को लेस देन 1 नबा for a less than 1 the integral function f1 alpha and f2 alpha may be evaluated by expanding the series
एच follows केमती यार एक्सपांशन हम देख ये हिसाब रे f1 अल्फार भैल्यूटा एतिकी थिला ओके तापर ये इंटीग्रेशन को हमको सॉल्व करिवार अछि सो e टू द पावर अल्फा प्लस x माइनस 1 याकू ये भले आमे लिखिदेला देन एटी आमे बाइनोमियल थ्योरम यूज करिदेला ओके फर्दर याकू आमे सॉल्व करि करि जिबा सो दैट फाइनली in terms of a आमर वैल्यू ये हिसाब रे गोटे सीरीज टाइप रो आसीबो which can be written as summation over r equal to 1 to infinity a to the power r divided by r to the power 3 by 2 and similarly f1 alpha जेमती बाहर कला f2 alpha रो वैल्यू भी आसीबो केवल डिफरेंस हला a to the power r by r to the power 5 by 2 हबो okay therefore the expression for the total number of particles and the total energy of the perfect Bose-Einstein gas याकू जो मैं लिखी दिला रिप्लेस कर दला वैल्यू को ओके एबे कोन करबा ए जो दुईटा इक्वेशन को डिवाइड करबा सो दैट वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ e बाय n ओके डिवाइड कर देला e बाय n रो वैल्यू पाइला एठी -1 अछि अगेन वी कैन अप्लाई द बाइनोमियल थ्योरम तापरे आकु पढिबा from which we get the value of e to be equal to 3 by 2 nkt into 1 minus the series again okay now the value of alpha or a can be determined by equation 15 or 21 that is f1 alpha equal to n by b into h cube by 2 pi mkt to the power 3 by 2 okay equation 15 বা 21 ରୁ ଦେଖିବା ସେ equation को ଯିବା equation 21 এই জায়গায় ଅଛି ओके याकू देख आउ सेम इटा n रो वैल्यू दउची राइट आउ इक्वेशन 15 को देख 15 এই জায়গায় ओके दिस इज इक्वेशन 15 सो याकू एबे जदी हमें मैच करिबा ताले हमें अल्फा रो वैल्यू इजीली पाई परिबा जोथरे कि इक्वेशन 15 और 21 रे बोथ साइड रे एलएचएस समान अछि सो इक्वेट कर दी कि हमें अल्फा रो वैल्यू पाई परिबा राइट अच्छा पुणी वापस आसीबा सो आमे देखिला इक्वेशन 15 और 21 रो f1 alpha रो वैल्यू एतिके आसिला now obviously f1 alpha is proportional to the particle density that is n by v and inversely proportional to t to the power 3 by 2 and for a very less than 1 the value of f1 alpha is equal to a so equation 19 is a equal to e to the power alpha which is n by v into this much so obviously a would be small for high temperature and low density in the classical limit however the general value of a or alpha can be obtained by inverting the series for f1 alpha okay so f1 alpha रो वैल्यू को ए हिसाब रे लिखि देला हम in terms of series so a equal to e to the power minus alpha हला which is f1 alpha minus the rest of the terms okay f1 square रे आसीबो f1 cube रे आसीबो ए हिसाब रे okay invert कर देला हमें series को right inversion is so this equation represents the value of a as a function of f1 alpha lastly let us see the Maxwell-Boltzmann distribution as a limiting case of the Bose-Einstein distribution limiting case को जगह आसीबो classical limit जो थरे कि a very less than 1 कहूची so that e to the power alpha plus beta ei that is 1 by a of e to the power beta ei becomes very large as compared to 1 so Bose-Einstein रो जो distribution law टा ए जगह रे -1 टा को हमें neglect कर दे परिबा so it becomes the Maxwell-Boltzmann distribution right thus in the limiting case of a very less than 1 the Bose-Einstein distribution law reduces to the classical Maxwell-Boltzmann distribution law and when the value of a is very less than 1 the higher order terms in a may be neglected then f1 alpha is equal to f2 alpha which is equal to a so that we may write the above equation 21 and 22 for the number and energy of the system like this and now dividing we are getting e by n equal to 3 by 2 kt or e equal to 3 by 2 n kt which is the well known result of classical statistics okay so this is all about the ideal Bose gas or the Bose Einstein gas Thank you.